Good morning and welcome to my channel with Karishni Agarwala. Actually, it is good afternoon. It's around 12 in the noon, and I just thought that let's start the vlog. So it's going to be like a normal day. So now I'm just sitting in my room and relaxing, enjoying the weather because it's too nice, too soothing weather, and I was just thinking to edit some of my videos, but then I thought that no, let's start the vlog first and then I'll do my other stuffs. Yeah, so guys, welcome back again, and let's see what we're gonna do for the rest of the day. Yeah, but now I was just thinking that let's go and take bath because the weather is too nice and I wanted to do my hair wash. And yes, stay tuned guys, let's see what we're gonna do. So guys, like for the past 15 minutes I'm sitting like this and I'm thinking that what I should do now. And I'm just saying myself that Uttu, now let's get up and go and take bath because I am seriously in need of bath. But at the other side I'm thinking I just want to sit like this with a camera and talk with you guys and enjoy the weather. I'll just show you guys कि कितनी अच्छी weather हो रखी है in Lucknow, and in the room in which I am, it's like a AC room without AC because इतनी अच्छी breeze आती है बाहर से, and we have like one balcony, one window. So if we open both the balcony and the windows, then it's like amazing, like you can feel that you are sitting in a sea beach or you're enjoying the the breeze from the high mountain somewhere like that. It's nice. So क्या करें, because today I've taken leave from cleaning my houses and all because I'm not in the mood to do, as it's my duty to clean the house, and then arrange everything, like bed sheets and then clothes and all, like a normal thing happens in the every house. So today I've taken leave from that, and because I was feeling a bit low, so yes, that's why I did that. Like I took a leave. I said my brother that today you need to do it. I said him yesterday also, and I said that this entire week is going to be like that because I don't know, I'm feeling too low. Yesterday also I was feeling so low, and today is the same thing. Actually, guys, I'm missing my now my normal life, my normal Bangalore life, how I go to college, how I try every time to escape from my class and then things to go back to PG and then sleep. I miss them all. I miss traveling from from my place to college, from college to my place, so on. I miss that hectic schedule which every day. And then if we used to get, like, obviously we used to get Sunday off and sometimes Saturday off, so it's like a wow, it's like a holiday, enjoy करेंगे, मस्ती करेंगे. I was so happy कि अब no more college for 2 days or for one day, it's like a off. But now I'm like, bro, I'm missing it because I don't think so that since my since I started going to school, from that time till date, I have been at home for more than 3 to 4 months. Like I've been this time. I think it's for everyone, right? Everyone except those students, those children who are trying to give some competition or something, staying in the home preparing for the
exams and all, but still they have a like, they obviously they will have a normal life while going out, chilling out somewhere in the malls. But you know, guys, this is corona time and everything has been fucked up so badly. So yeah, I'm just like, missing that. I don't know. I just wish that that time comes soon and then we'll have that normal life again. And again, those complaint filled, life with college giving you the burden to study, and then college giving you with full loads of assignment. I think it happens with every college student. Every time, pissing off and getting irritated on your teachers. Sorry to say that, but that's true. That happens when you get irritated, you get frustrated, and then you're like, shit, damn, the assignments. In my college, it's like that. Every fucking day, you will get the assignments, and you know, so I get pissed off. Now there's no tension only. Like, I'm not even thinking of my semesters, that what will happen to my semester and all. Now enough of buck. I don't know, like, I told you guys, know that I was just feeling that sit and talk in front of camera, blabber something, blah blah blah, anything. Okay, so I think it's. See, I started a vlog at 12 o'clock and it's 12:35 and abhi tak like I'm not doing anything, and I was supposed to go and take bath, but I'm still on my bed. I'm just thinking that I should go or not. I have to go. There is no option for not going, but now or later. That's a doubt. Okay, I'll see you guys. Hey guys, welcome back again. So I took a shower and now I'm feeling so good, so better after taking shower, and it's around 1:46. So I again took a camera and then I was like, let's start the vlog. So yes, I am wearing like a one piece. I'll show you later on. And then I just did some makeup. Not makeup, I just put, I just moisturized my skin, and then I don't know why I'm so like sweating so much. Okay, so I just moisturized my skin, and then I just put some BB cream or CC cream. I don't remember. It was BB cream, yeah. BB cream, Lakme 9to5 BB cream, and then nothing else, just an eyeliner. That's it, and I'm ready for the video. So yeah, now what I'm gonna do, I have given some work to my brother. Like, I shoot the video, I do things like this, and then what he does, he edits my video. So वो edit करता है, मैं shoot करती हूँ. तो अभी उसको मैंने बहुत सारे वीडियोस दे दिए हैं, कि बहुत सारी वीडियोस जो मैंने पहले से बना के रखी हुई थी जिसको एडिट होना था, तो वो एडिटिंग कर रहा है. एंड देन आई थॉट दैट वो जहाँ पे एडिटिंग करता है, तो लेट मी स्टार्ट माई व्लॉग. तो यस, दैट्स इट. एंड देन ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, क्या मैं भूल गई. ओके, आई विल टेल यू गाइस. एंड अभी ऐसे कुछ करने को है नहीं फ़िलहाल, बट या घर के बहुत सारे काम बचे हुए हैं, बिकॉज आई शो यू. सो आप यहाँ से देख सकते हो ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं, एंड आई नीड टू टेक इट आउट ऑफ द स्टैंड. एंड या सो मुझे उसको स्टैंड से निकालना है, एंड देन आई नीड टू फोल्ड इट, एंड देन आई नीड टू कीप इट बिफोर माई मॉम कम्स. तो मतलब आई कैन डू इट ऑल्सो. मैं नहीं भी करती तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल आई थिंक दैट मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि मम्मी she'll come from school and then she will be like tired, so she also has like lots of pressure in her head. So yes, I don't know why I'm feeling shortness of breath, but I'm okay.
Don't think guys that I have corona. No corona please. I'm perfectly alright. कभी कभी हो जाता है कि मुझे कभी कभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सो वही हो रहा है. एंड स्पेशली इन दिस समर टाइम, लाइक कभी भी हो जाता है बट स्पेशली समर्स में होता है, या बहुत ज़्यादा विंटर होती है तो, बिकॉज आई एम नॉट लाइक अ कोल्ड वेदर वाले बच्ची, सो हो जाता है. सो इट्स ओके. सो मैं अभी सोच रही हूँ, अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया कि ऐसे तो कुछ है नहीं करने को घर पे, सो वाई नॉट शो यू गाइज माई मॉम्स यू नो oxidized jewelry and some of mine also into that. And then yeah, because she has lots of oxidized jewelries. She loves those, and even I have got those into, like, you know, into my jeans, because whenever I'll go, it's like anywhere I it's very necessary for me to, you know, buy those oxidized jewelries. So yes, I'm thinking that I'll show you guys the oxidized jewelries of my mom's collection, and into that some of mine, because mine are like I have lots of oxidized jewelries, but वो सारे Bangalore में हैं. I don't have any of the stuffs here. I have, but like, you know, very little, like not like a handful also. It's like 2 or 3 something, but I'll show you guys that also. He is editing, he is uploading my video, and मतलब आई थिंक कि ये व्लॉग जाने से पहले वो चला जाएगा, बिकॉज आज ही अपलोड हो रहा है. तो कल आएगी. ओके, सो tomorrow the video is going to be uploaded in the YouTube. Tomorrow's date is 23rd. हाँ, तो 23rd को वीडियो जाएगी, अपलोड होगी. एंड और क्या, दो वीडियोस अपलोड हो रही है एक्चुअली. जो है वो वीडियो तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा. वो बन गई थी मुझसे इतनी बड़ी, एंड क्योंकि मैंने इसमें बहुत बक किया है, एंड देन यू नो, मतलब उसको मैंने बहुत ज़्यादा नेचुरल रखा था, तो उसके चक्कर में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी. तो फिर हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड दोनों एक साथ ही अपलोड होगा, बिकॉज़ हमने वहाँ पे डाला है कि पार्ट 2 विल कम सून, बट ऑलरेडी वो पार्ट 2 हमें काटना पड़ा था, मतलब यू नो ब्रेक करना पड़ा था, बिकॉज द वीडियो वॉज गोइंग टू बी अराउंड मोर दैन 25 मिनट्स का वीडियो था. तो आप सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा, मोर देन 30 मिनट्स 35 मिनट्स का वीडियो था वो, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था. तो इसलिए अभी 2 वीडियोस एडिट हुए हैं, अभी अपलोड होंगे. एंड देन और अभी मुझे 2 शूट और करने हैं, तो आई थिंक वो शूट मैं कल करूँगी. हाँ, मैं एक शूट शायद कल करूँगी. अपलोड हो गई कल की 11 बजे सुबह. So yes, tomorrow 11 o'clock it will be uploaded. एंड मैं अभी आपको बता रही हूँ, बट आप ये व्लॉग जाने से पहले वो वीडियो आ चुका होगा. तो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, मुझे 2 वीडियोस और शूट करनी है. ऐसे शूट्स तो बहुत सारी करनी है, बहुत सारे कंटेंट्स हैं दिमाग में, बट अभी एट इट स्ट्रेच मुझे अभी 2 वीडियो शूट करनी है, एक रिव्यू और एक. बाय द वे गाइज, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल दी फादर्स ओवर देयर, एंड आई होप आपने बहुत अच्छे से फादर्स डे सेलिब्रेट किया होगा, अपने फादर्स के लिए कुछ ना कुछ तो स्पेशल किया होगा. हमने ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं किया, क्योंकि यू नो इसकी एग्ज़ाम आ रही है, एंड देन मतलब मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वी जस्ट केप्ट इट वेरी सिंपल, एकदम सिंपल सोबर, और कुछ खास ऐसा कुछ किया नहीं. तो एंड स्पेशली कल ग्रहण था, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हमारे घर पे माना जाता है ग्रहण. इवन लाइक मेरी मम्मा बहुत मानती है, तो कुछ हो नहीं पाया.
ओके गाइस, या तो आप लोग कमेंट डाउन ज़रूर करना यार कि आप लोग क्या करते हो while you are sitting in the home, what is the daily routine which you follow. बट मैं ऐसे तो अभी मैं आपको अपनी 24 आवर्स में से 20 मिनट्स दिखाती हूँ, 24 मिनट्स दिखाती हूँ, या ऐसे अभी तक तो मेरे ख्याल से ब्लॉग जो है वो गया होगा नॉट मोर देन 15-16 मिनट्स. तो मतलब हाँ, तो अब आप समझ सकते हो कि 24 आवर्स में से लाइक इफ आई एम अपलोडिंग ओनली माई 16 मिनट्स वीडियो, 16 मिनट और 15 मिनट्स वीडियो, तो मैं अपने लाइफ में कुछ भी नहीं दिखा रही. तो मैंने क्या प्लान किया है कि मैं एक दिन लाइक प्योर रूटीन दिखाऊंगी आपको कि मैं सुबह उठते के साथ क्या करती हूँ, व्हाट आर द थिंग्स आई डू, एंड लाइक स्मॉल थिंग्स जो मैं डेली करती हूँ, लाइक एट व्हाट टाइम आई वेक अप, जल्दी से उठने के बाद मैं क्या करती हूँ, एंड ये सब. तो या आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट एकदम एकदम रॉ, क्योंकि अभी मैं आपको सुबह उठने के बाद मैं सोचती हूँ यार ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, देन आई स्टार्ट दी ब्लॉग एंड ऑल दोज थिंग्स. तो ये आई एम थिंकिंग, एंड there is one second, yeah, and there is like मुझे एक वीडियो भी शूट करनी थी मम्मा के साथ, जो कि कल करनी थी बिकॉज मम्मा को टाइम नहीं मिलता है, ओनली शी गेट्स फ्री ऑन संडे. सो बट कल हो नहीं पाई थी. शूट अपने भाई के साथ भी करनी है, उसको पता है किस चीज़ पे करनी है, बट वो भी अभी तक हो नहीं पाया. भैया आ गए मेरे ख्याल से. तो उसकी ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है कंप्यूटर की. माई एल्डर ब्रदर कज़न, हमारे कज़न, वो ले रहे हैं. So, ऐसे होते हैं. आई होप दिख रहा हो क्योंकि मैंने कैमरा को वजह से टर्न कर दिया था. लो फिर खराब हो गया थोड़ा अंदर. Hey guys, good morning. And today is the next day. I didn't vlog at the night for the dinner because I was too sleepy again. So I just had my dinner and then I went off to sleep. I slept very early yesterday. It was around 11:30 that I slept. So now it's 9:45. I woke up few hours ago, like 1 hour before, and then but still was feeling too sleepy. So I was, sleeping, and now I got up. I just freshen up, and so now I'm going to make breakfast for myself. So yes guys, that's it for today's vlog, and thank you so much for watching. And if you are new to this channel, so please subscribe it, like and share if you like this video. Thank you so much guys. Bye. Yeah.